बैक टू दी पेलोड्स. नाउ आपको शायद ये समझ आए, आई होप, क्या क्या सेंसर्स एंड इक्विपमेंट्स हैं. इस बहुत 7 पेलोड्स आर देयर. और द फर्स्ट इज विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ. तो coronagraph is simply that is based on the imaging spectroscopy. Corona imaging is simply to understand what these are actually. This is something, a spectrum of light. Visible range, then infrared, then microwave, then radio wave, then UV range, alpha, gamma, beta, and the most powerful is the gamma range. This is simply a spectrum of light. White light. So this is something, a differentiation or classification of different ranges of light in a particular white light, and that any white light contains these different ranges based on the wavelength and energy level. Okay, so if you see the left side of this particular spectrum that begins with gamma is having the high level of energy and high frequency, but this shorter wavelengths. थोड़ी सी फिजिक्स है, बट लेकिन जैसे जैसे आप राइट साइड जाते हैं तो आप देखते हैं कि रेडियो वेव इज हैविंग ए हाई लेवल ऑफ वेवलेंथ एंड द लो लेवल ऑफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी. तो व्हाट इट इज अबाउट दैट कि कोई लाइट को आप देखते हैं तो ये, हाँ, आप विब्योर का कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं, विब्योर, तो दैट इज द फोटिक, आई मीन वो कलर्स का डिफ्रेंशिएशन है, ये अलग है. ओके, विब्योर इज बेस्ड ऑन योर आई लेवल. विब्योर इज ऑफ दैट विजिबल रेंज का ही फिर से अलग ये विब्योर है. गेटिंग दैट? विब्योर क्या है? आपकी विजिबल रेंज जिसमें आप देख सकते हैं अबाउट 0.7 to 0.4 0.3 अप टू 3 इस माइक्रोन मीटर की बात कर रहे हैं उस लेवल में. तो ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत माइक्रो लेवल है. तो इसमें विब्योर का कॉन्सेप्ट है इसी विजिबल रेंज में, बट दिस इज समथिंग मोर देन दैट विब्योर. और इसमें हम गामा रे टू रेडियो वेव की बात करें. ओके, फाइन. तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट है, सिंपल फिजिक्स है. और ये सिंपली इस बात को दर्शाने के लिए इसकी कल्पना की गई है, इसे बनाया गया है बिकॉज ऑफ कि एनर्जी लेवल इज वेयर हाई एंड वेयर इट इज़ लो. ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे समझेंगे. तो नाउ कम इन टू दिस पर्टिकुलर VELC, विजिबल इमिशन लाइन एंड क्रोनोग्राफ. तो विजिबल इमिशन लाइन मीन्स व्हाट? विच इज़ विजिबल फ्रॉम आवर द आईज एंड वेयर वी कैन सी. हमने देखा फोटोस्फीयर को हम लोग विजिबली देख सकते हैं. ठीक है, तो दैट फोटोस्फीयर को लिखा भी है उन्होंने, यहाँ पे आपने देखा, इट इज टू स्टडी व्हाट? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना. सो हाउ इट विल बी स्टडीड? बाय दिस पर्टिकुलर पेलोड, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ. यू अंडरस्टूड? क्या सिंपल सा बात है ये. एंड बट इमेजिंग विल बी देयर, दो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट येस आपको जानकारी होना चाहिए एटलीस्ट. Solar ultraviolet imaging telescope. So solar UV imaging telescope which only focus on the UV range of happenings in the sun. So this is something again a sensor that is simply to understand the photosphere and chromosphere.
and these particular areas. So that can be visible by this particular ultra UV imaging telescope. So this is telescope which is having the range of UV range. Okay, तो ultraviolet range है. It is not the visible range telescope but the UV range telescope. So it is having the high frequency energy and low wavelength. तो उसको भी वो कैच कर सकता है, इसकी ये कैपेबिलिटी है ना, यूवी रेंज को भी. सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सन एज ए स्टार ऑब्जर्वेशन. सोलर लो एनर्जी मीन्स, नो, we had to understand that the sun is not constantly ejecting or radiating energy at the constant or invariable manner. Means what? अगर वो एक बार में, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए मैं 1000 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो नेक्स्ट सेकेंड में क्या 1000 जूल होगा या फिर थर्ड सेकेंड में 1000 जूल होगा? आंसर इज नो. तो देर इज ऑलवेज द फ्लैक्चुएशन, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स कि आपको इतना ही एनर्जी रिलीज करना है या फिर इससे ज़्यादा नहीं, है ना. जैसे हम लोग कंट्रोल्ड थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग करते हैं, जैसे कुडनकुल्लम प्लांट में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कंट्रोल्ड होती है कि इसी रेट से एनर्जी रिलीज होगा, इसी रेट से ब्लास्टिंग और फ्यूजन होगा, नॉट फ्यूजन. तो सन में नेचुरल है, तो वो अपने हिसाब से कभी लो कभी हाई होगा. ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विल बट असेस ड्यूरिंग द सन्स लोअर और लो एनर्जी लेवल एरिया. जब कभी आपने देखा कि कोरोना का कुछ पार्ट है जिसमें कूलर एरियाज हैं, कुछ हॉटर एरियाज हैं, फोटोस्फीयर, कोरोनास्फीयर हमने देखा. तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनवेरिएबल चेंजेस और फ्लैक्चुएशन इन द सोलर थर्मल पावर्स एनर्जी दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम सन. तो रेडिएशन हमेशा एक सा नहीं होता. दैट इज सिंपल आइडिया. आपको उस इसरो साइंटिस्ट के लेवल से नहीं सोचना, बट सिंपली आप समझ लीजिए कि ये. देन हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सन एज ए स्टार ऑब्जर्वेशन. So these are the all remote sensing payloads, means इन ऑब्जर्वेटरी से सन के कॉर्नरस्फीयर और फोटोस्फीयर को देखेंगे. ओके, रिमोट सेंसिंग. व्हाट इज इन सिटू पेलोड्स? व्हाट आर दीज थ्री? आदित्य, सोलर, विंड. आई मीन दीज पेलोड्स और दीज सेंसर और इक्विपमेंट्स विल वर्क एंड दिस विल टेस्ट द सराउंडिंग एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर आदित्य L1. ये सन के एरियाज को नहीं देखेंगे, है ना, जो कॉर्नरस्फीयर फोटोस्फीयर को नहीं देखेंगे. ये किसको देखेंगे? सिंपली जहाँ पे ये प्लेस्ड होंगे L1 पॉइंट पे, वहाँ के आसपास का वो सेंस करेंगे, उसे एसेस करेंगे. ओके, दिस मीन्स इन सिटू पेलोड्स. ठीक है, जहाँ पे ये पेलोड्स हैं वहीं के आसपास एरिया को देखेंगे, ना कि सन को देखेंगे. तो क्या देखेंगे वहाँ पे भी? तब भी वो देखेंगे रिलेटेड टू सन्स अफेयर. क्या क्या होगा वो फिनोमेना? आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. सिंपली जब सन से प्लाज्मा रिलीज होता है which is ionized and highly thermal gases or that state of matter that is called as plasma, तो वो बाद में सोलर विंड्स में कन्वर्ट होता है. तो उन सोलर विंड्स का इन L1 पॉइंट में क्या असर होगा उसको कौन असेस करेगा? दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. ठीक है, सिंपल इज दैट. इसे और आप समझेंगे जब हम लोग इनको डिफरेंटली पढ़ेंगे. प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, दिस इज अगेन कॉल्ड द पापा. व्हाट इज दिस? सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर, इलेक्ट्रॉन्स एंड हेवियर आयंस विद डायरेक्शंस. कि उनका डायरेक्शंस हमेशा एक साथ होता है क्या? सन से अर्थ की तरफ केवल आता है या फिर कभी कभी उस डायरेक्शन में होता है? जैसे आप फैन को देखते हैं, उसका स्विंगिंग होने से फैन की डायरेक्शन अलग होती है. सिमिलरली क्या सन एक ही डायरेक्शन में अपना कोरोनल इजेक्शन करता है या प्लाज्मा रिलीज होता है या थर्मल रेडिएशन? तो आंसर इज मे बी नो, एंड दैट इज मिस्ट्री एक्चुअली, एंड दैट विल बी स्टडीड बाय दिस पर्टिकुलर एनालाइजर कॉल्ड एज acronym with PAPA. So that will what the task of the PAPA is to analyze the plasma's directions and solar wind's direction, whether that is having a same direction entire the year or having some changes within that. ठीक है, ये clear है. Now next is advanced triaxial high resolution digital magnetometer. It is again the to study the magnetic field of these solar winds. जब ये ionized particles जब आते हैं in forms of solar winds,
उस स्पेस के एटमॉस्फेयर में तो ये क्या किस प्रकार से उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, क्या उसका असर अर्थ को होता है? तो दैट इज़ वेरी क्यूरियस थिंग एक्चुअली, we'll try to understand in the further part. Okay, तो now इसे आप और अच्छे से समझेंगे when you understand the science of sun. What are these objectives? Simply, what are the major science objectives of the ADITYA L1? If I could read, the coronal heating and solar wind acceleration, coupling and dynamics of solar atmosphere. What is solar atmosphere? What are the space atmosphere? That is needed to be understood. Then solar wind and distribution and temperature anisotropy, temperature variations and these readings. I mean these study. Then initiation of coronal mass ejection (FME) and flares and near Earth space weather. What is this space weather? So that is important. Now let us start with these are the areas where ADITYA L1 will be assigned to understand or assess these areas, whether that is dynamics, origin of coronal mass ejections, particles dynamics, directions, and these are the areas. No, these are still not known. These are the top objectives for this ADITYA L1 mission. Simply I would like to here discuss the space weather. So what is space weather? So space weather is something that is comprised of solar winds and magnetic fields. Space weather, as we talk about the Earth's weather or Earth's atmosphere, तो क्या हम लोग बात करते हैं? सिंपली गैसेस, क्या क्या गैसेस हैं, कितना शेयर में है, where the position of troposphere and ozone layer, अर्थ्स रेडिएशन कैसे होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के क्या कंपोजिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या कंपोजिशन है, ये हम लोग पढ़ते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर पे या फिर अर्थ की वेदर सिस्टम पे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं अर्थ वेदर में. अगर ये तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हुआ, अर्थ का वेदर में क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, नो साइक्लोन्स, नो these are the and at the same time cold wave, heat wave, these are the conditions we study in the earth weather. But what about space weather? That is a new thing. Now they can ask the question, what is space weather, or space weather is known by what are the phenomena of space weather? So simply a space weather comprises of solar winds, sun's magnetospheres or magnetic field that is affecting these areas. So this is something a very important. स्पेस वेदर को भी समझना है उसे. आप आगे और सिंपली समझेंगे जब ये देखेंगे. आई वुड लाइक टू हियर डिस्कस विद नो सन्स प्लाज्मा. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. यू हैव ऑल्सो आइडिया ऑफ प्लाज्मा इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड, है ना. प्लाज्मा होता है उसमें भी, वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्लड. रेड RBCs, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं. these all composed of what? These constitute our blood system. So blood cells are there including plasma, RBCs, WBCs, white blood cells. Okay, the plasma is there. So plasma therapy you have known during the COVID-19 period. Okay, तो yellowish color का एक होता है plasma. Sun's plasma is a different thing. I have said that it's the most energetic charged particle area that is escaping from sun's gravity and fly away out into space. So that plasma is known as solar wind because it blows out away from sun and past the planets, interacting with their magnetic fields and our atmosphere along with the solar winds. That wind comes the sun's magnetic field which reaches from the sun out to past Plato और नेपच्यून. तो ये सोलर विंड्स और सन की जो प्लाज्मा है, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्थ ओनली, बट इट इज रीचिंग अप टू द लास्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन प्लेस्ड नियर टू कुपियर बेल्ट, दैट इज नेपच्यून और प्लूटो. तो दैट इज encompassing entire solar system, सन टू इवन अप टू प्लूटो. प्लूटो आज की डेट में प्लैनेट नहीं है. 2008 में उसे प्लैनेट सिस्टम से बाहर किया गया बिकॉज ऑफ द इसेंट्रिक ऑर्बिट.
एक बार सन के अराउंड घूमता है तो कभी कभी वो बाहर हो जाता है, तो इसीलिए उसको अर्थ आई मीन प्लानिट के उस कैटेगरी से डिफिनेशन से बाहर कर दिया गया प्लूटो को. So that is a different thing, but it even reaches up to the Pluto and Neptune. So not only that Earth is affected by these solar winds or these powerful energetic charged particles, which is called as solar wind. That is the I mean one of the form of plasma, sun's plasma. Okay. Now this is how the state of phases of matter of plasma. No temperature or energy. If plasma is there, the high energy, high temperature state of matter. If that is solid like this is low and cooler in temperature. So this is something, a structure of atom. Now what are the science magic of sun earth interactions? Have you seen this kind of aurora borealis or aurora australis in the northern hemisphere? Aurora australis near to Sweden, Norway or part of Russia. You can see जब भी आपको छुट्टी ऐसे मिले और वहाँ आप जाएं तो यू विल सी द ऑरेरा बोरेलिस, एंड नीचे अगर आप जाएंगे अंटार्कटिका रीजन में तो ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस. तो दीज आर द illuminating or neon colored appearance in the sky, in the night sky. Particularly these areas witness about 6 months of night and day. That's why this is very much visible in these parts. Even that is clearly visible from International Space Station that is placed at the space. But these areas are very unique in experience. Whenever you get the time, you must visit these areas. And why this, what are these aurora, I mean why these are happening here, what are the reason behind this occurrence? And simply this is because of solar winds interaction with earth's magnetic field. Okay, तो पहले के समय में ये होता था कि ये बड़ा अजीब सा चीज़ है, लोग इसे समझते थे कि that is something blessings of almighty divine power and some powers are there which some ghostly और some haunting कहानियाँ बनाते थे. वो स्वीडन से नॉर्वे के एरिया में बाइकिंग्स हुआ करते थे, सो फियर्स ट्रैवल ग्रुप बाइकिंग्स. तो उनके लिए हमेशा होता था कि दैट इज़ द सोर्स ऑफ पावर एंड देयर डिवाइन पावर. तो इस तरह से इवन यू कैन सी दिस चर्च एट द पार्ट ऑफ दिस नॉर्वे. तो ये ऑरोरा बोरेलिस. Simply these solar winds, those are form of plasma and high energy, high temperature, ionized and energized material in form of plasma, and they are interacting with Earth's magnetic field. As I said that these solar winds are not just the partial or pockets of the only energy or heat, but these are also combined with magnetic field. So these are not just the solar winds, so these are also magnetic, having a magnetic influence. Their magnetic influence interact with Earth's magnetic influence, and that somehow create this kind of wonderlands, I mean this kind of magic. So how it works, electrons hit air molecules simply, and molecules are excited and molecules give up light as they calm down. So whenever any molecules are there in the calm state, even in the less excited state, it is heated by the energized photons, I mean these solar winds, then it also becomes charged and it also illuminated. इस तरह से जो लाइट होती है, लाइट इमिशन, इसी से क्या हो जाता है, ये पूरा एरिया एट द हाइट ऑफ अबव अबाउट 100 और 80 किलोमीटर अबव ये इस तरह से दिखाई देता है, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी सीन लाइक दिस. इट्स सो ब्यूटीफुल ना. तो इस तरह से है, लोग इसके लिए कई बार छुट्टियों में जाते हैं देखने के लिए ऑरोरा बोरेलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस. So these are the upper atmosphere, Earth's upper atmosphere phenomena. Okay, so this is important. Then magnetotail. We'll read later on what is magnetotail by the diagram. कि क्या ये है, ये neon. So it is all about aurora. आप ये समझे होंगे. Now how it functioning? Now ये होता क्या है? Second thing, because of these charged particles or
प्लाज्मा व्हेन इट इंटरेक्ट्स विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट इवेंट क्या हुआ, ऑरेरा बोरेलिस या ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस। सेकेंड इवेंट क्या हुआ, इस तरह का। ये होता क्या है, यू कैन सी हियर, अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। ये फोटोग्राफ को बाद में इमेजिन करना, पहले सपोज अर्थ इंडिपेंडेंट होता, कोई मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं होता दूसरे, तो कैसे होता है इसके मैग्नेटिक फील्ड, चारों तरफ होते। मैग्नेट कैसे काम करते हैं, इस तरह से होता है ना जनरली, ऐसा। मतलब मैं बराबर नहीं बना पा रहा हूँ। यस, एक दो डायपोल होते हैं ना, आप ये जानते हैं डायपोल। लेट से दोनों के तरफ इक्वल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है, दैट इज नोन एज डायपोल। डायपोलर होता है, दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो ये बाइपोलर या डायपोलर होती है, तो ये आप देखते हैं कि ये दोनों तरफ होता है। जब लेकिन ये इसे मैं अब हटा रहा हूँ, ये नॉर्मल टाइम पे होता है अगर अर्थ इंडिपेंडेंटली होता विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बट जब सोलर विंड के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के वजह से ये आप देखते हैं इस तरह से आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये होना तो चाहता था यहाँ तक, लेकिन ये कंप्रेस हो जाता है। आप देख रहे हैं अर्थ की फील्ड यहाँ तक केवल रिस्ट्रिक्ट हुई, इन एरियाज तक ही रिस्ट्रिक्ट हुई, बिकॉज उससे इंटरेक्शन होने के बाद ये अपने एरिया से, ये इतना पावरफुल है सन का कि ये अपने आप कंप्रेस हो गया, सिकुड़ गया इस तरह से। ओके, तो दैट इज बिकम, ये होना चाहिए था यहाँ पे, बट ये यहाँ से आके यहाँ तक आ जाता है, तो इतना डिफरेंस हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट, तो अदर पार्ट क्या होता है, वो बिल्कुल जब ये इतना पावरफुल सोलर विंड्स आते हैं, तो अर्थ को जब क्रॉस करते हैं या तो इसको इंटरसेक्ट करते हैं, इसके थ्रू जाते हैं, तो ये बाकी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाती है, इस तरह से टेल की तरह हो जाते हैं। रैदर क्या होना चाहिए था, ये भी ऐसे होना चाहिए था, तो ये ऐसा ना हो करके क्या हो जाता है, इस तरह से टेल की तरह हो जाता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। These are the anomalies, these are the changes because of interaction between Earth and solar winds magnetic field. So that these area is known as, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैग्नेटोटेल। हमने बात किया था ना, magnetosphere, the plasma swept magnetosphere that looks more like a someone's hair got blown in the wind. जैसे जब हवा लगता है तो आप देखते हैं किस तरह से हेयर पीछे की ओर चला जाता है या टेल की तरह दिखता है, तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्थ सन मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मैग्नेटोटेल। टेल मीन्स द पूंछ। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द डायपोल नेचर of magnetic field of Earth's become altered due to solar wind and sun's magnetic fields interaction. Aurora, sorry, no, that is a different thing, वो interaction different है, ये this is something happening which is not visible to us. इससे क्या changes होंगे, so that is what the good question. दिस इज समथिंग सन अर्थ कनेक्शन। ओके, ये जो इंटरेक्शन है, देखिए इससे क्या होता है, सब उसके पहले उसमें आते हैं, कांस्टेंट सोलर इफेक्ट्स ऑन अर्थ। नो, सनलाइट अबाउट टेक 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच द अर्थ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ 19 मिनट्स, ये स्टेट कमीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब पार्टिकल्स ये सोलर विंड्स को पहुँचने में अर्थ तक में 4 डेज लगता है, तो देयर रेट ऑफ प्रोपगेशन इज but not faster as of the light, है ना। फोटोन्स की लाइट बहुत फास्ट है, क्योंकि 8 मिनट 19 सेकेंड में अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं सुबह की सूरज के रोशनी, लेकिन ये सोलर विंड्स टेक अबाउट 4 डेज, तो ये बहुत स्लोली प्रोपगेट करते हैं, 4 दिन लग जाते हैं। कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू सन, तो 150 million kilometers. 150 million kilometers means 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। So this is something idea. Now before going into the L1 point, इसमें आपको इसमें क्लैरिटी है
पूजा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. These are the what is aurora or this kind of phenomena? Simply solar winds interaction with the atmospheric gases, and that ionize these gases. Those are already in Earth atmosphere, and that become illuminated, and that illuminated part what we call as a aurora. That happens in both North Pole and South Pole. Because okay, now second thing that is influencing the Earth's area, I mean Earth's body system, is the magnetic field. Sun's magnetic field, when interact with Earth magnetic field in the form of magnetosphere interactions, then that very phenomena develop in a form of this particular Sun Earth connection. I mean interaction of different magnetic fields or magnetosphere, है ना. magnetosphere को कहते हैं इन बड़े एरिया को magnetosphere. These fields, and these fields when interacted, then that significantly alters the magnetic field working of Earth system. तो कैसे हो जाता है, सामने जब सन के सामने से जब सोलर विंड आता है, अर्थ के सामने वाला एरिया जो फेसिंग है सन की तरफ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक होनी चाहिए थी, जो स्क्वीज होके यहाँ होगी, जिसे हम लोग बो सॉक कहते हैं. ठीक है, जो टर्म है बहुत सिंपल से. एंड जब इस तरफ भी दूसरा पोलर रीजन में जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही होती है, क्योंकि दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है हमेशा, ये तो आप स्कूल से जानते हैं, तो उस एरिया में वो भी इस तरह से फुली एक अपना इन्फ्लुएंस ना रख करके वो टेल की तरह वो स्क्वीज होती है, इलोंगेटेड होती है. जैसे किसी का, जैसे इन्होंने लिखा है कि जब हेयर इज गॉट ब्लोन अवे व्हेन ड्यू टू द विंड, एनी स्पीडी विंड. so this is something the effect or influence on the Earth's magnetosphere. So these are the natural phenomena that are taking place since the inception of solar system, our solar system. ठीक है. सर ये ऑरोरास कहाँ पे विजिबल है? ये ऑरोरास विजिबल होंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रीजन में. मीन्स साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इन द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, एंड नॉर्थ पोल में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एंड देन ग्रीनलैंड और सम पार्ट ऑफ रशिया. सर तो ऐसा क्यों है कि उधर ही विजिबल है? बिकॉज ऑफ द 6 months of day and night and the lesser amount of insolation that reached to these areas, because sun की जो sunshine होती है ना, sunsainity और sunsineness, that is lesser in these north and south pole, because oblique ray पहुंचती है sun की, तो आँखों को मतलब आराम से वो बहुत एंटी ग्लेयरिंग होती है सन. जैसे यहाँ की सन आप देखते हैं कितना चमकीला होता है. तो आप अब सिंपली मैं आपको एग्जांपल से कोट करना चाहूँगा कि कोई लाइट अगर जलाया जाए डे टाइम में, हाइलोजन लाइट भी क्यों ना हो, सन की लाइट के सामने क्या वो दिखेगा क्या, या तो उसकी ज़रूरत भी है या फिर नहीं दिखेगा वो. या फिर कहीं सजाया हुआ कोई लाइट, आप दिवाली जो रात को आप देखते हैं, अगर डे टाइम में सभी घर में उसी तरह से ग्लिटरिंग लाइट जला भी दी जाए, तो दैट विल बी नॉट अफेयरिंग नो in better way. ठीक है. तो orally that is very much visible, because आप देख पा रहे हैं, because sunlight is so oblique, वो sunlight बहुत कम होती है, और because of the spherical the geoid shape of earth, the oblique हाँ, तो tilted यानी oblique sunlight पहुंचती है, insolation कम होता है, चमकीला कम होता है, तो 6 months of night में ये दिखता है. ठीक है. whenever you हाँ solar winds are not these are only propagated from sun system. ये अर्थ से जनरेट नहीं होते हैं. yes. but the what is your doubt, क्या क्या क्लियर नहीं हो पा रहा.
ये चीजें सर और भी जगह तो हो रही हैं, पर सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ. That is again because of, that is visible because of why, because of these areas are list. सबसे पहले तो इस एरिया में क्या है, एटमॉस्फेयर्स एक एक्टिविटीज़ जो हैं, मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड अदर काइंड ऑफ जो वेदर फिनोमिनाज आर लेस. आप समझ रहे हैं इस बात को. तो दैट्स वाई द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन स्टेबल पोजिशन. पोलर वोर्टेक्स होते तो हैं, लेकिन वो एक शांत मौसम में ही ये दिखाई पड़ते हैं. ऐसे नहीं है कि एक साइक्लोनिक कंडीशन है नॉर्थ पोल में और वहाँ पे दिख रहे हैं, और ऐसा नहीं होता है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्री रिक्वेसाइट. आज के डेट में एस्ट्रो टूरिज्म हो रहा है, जैसे हैनली या फिर आप नैनीताल लेके जा रहे. क्यों? क्योंकि बच्चों को अपने घरों में, टाउन्स में, सिटीज़ में दिख ही नहीं रहे स्टार्स, तो उन्हें ले जाया जा रहा है लद्दाख और अदर एरियाज़ जहाँ पे क्या क्या दिखाया जाता है, स्टार्स. So that is again a rare phenomena in urban centers. That is again, these are the factors for easy visibility of this aurora borealis, and these areas, because of the thin, the atmospheres are so thinner in this part and less turbulent and less of any cloud and other any weather phenomena. So that's why they are interacting this area. And the same time, because of peril and cell, आप देखते हैं किस तरह से अर्थ के वो जोग्राफी आप पढ़ते हैं या नहीं, मतलब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि किस तरह से वो फेरल सेल एंड बाकी जो सेल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं. तो दीज आर ऑल्सो अ फैक्टर बिहाइंड ऑरोरा बोरिस. स्टिल दैट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च, है ना. पूरी तरह से उसके बारे में भी डिसाइफर या डिकोड नहीं किया गया अभी तक कि why this is happening only in the polar region, not in the equatorial region. So these are the areas. That's why ADITYA L1 is there, no, deployed in that area to study. So no, this is that is something important. Okay, so the vantage point, Lagration point, simply this is something that एक्चुअली में क्या हुआ था. आप सिंपली अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दैट इज टू हॉनर द इटालियन फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफी लुइस लैग्रेंज. ही फर्स्ट टाइम forwarded or postulated the idea of the general three body problem. Three body problem is simply the gravitational influence in each other. So that is because he tried to understand, or he tried to postulate that what are the if that become at that point of time 1772 when he published his idea or that paper. So that was not much of the use, but he tried to just try to solve this issue. But later on, when space science become well developed and agencies started functioning, so they found that if you want to place any satellite in any orbit, then you cannot you have to place in such a particular orbit where the gravitational pull are equally distributed to two body, then only it can be placed well, and ये इसी तरह से काम होगा. तो L1 पॉइंट इज सिंपली आपको इतना समझना है कि जब अगर ये दो बॉडी सिस्टम है, और अगर किसी बॉडी को आप किसी सैटेलाइट को, यानी किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आप प्लेस करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आपने किया तो ये आराम से ऑर्बिट करता रहेगा और उसे लेस फ्यूल और मैन्यूवर की ज़रूरत होगी. इन केस आप इन L1 पॉइंट्स में यानी लैग्रेशन पॉइंट्स में नहीं प्लेस करेंगे तो बार बार उन्हें फ्यूल को खर्च करना पड़ेगा, या फिर सोलर पावर्ड होना चाहिए जिससे अपना मैन्यूवर को बार बार ऑर्बिट को अगेन अगेन सेट करना पड़े. दैट इज़ अ चैलेंजियस टास्क. yes, so that is a very serious thing. If you cannot able to, if there are some issue because of the communication, तो इसके वजह से वो डीऑर्बिट हो सकता है, और जो आपको जो ऑब्जर्व करना है या असेसमेंट करना है या फिर पर्पज से में भी वो फेल हो सकता है. So that's why L1 points play a very important role, because it is, these are the areas L1, L2, L3, L5. These are the gravitational common or transition areas where mutual gravitations are in the neutral position,
इफ़ यू प्लेस एनीबडी, इवन मैं भी वहाँ पे चला जाऊँ तो मैं केवल घूमता रहूँगा, ना इधर जाऊँगा ना उधर. So that is something unique points, and that was very first time general three body problem postulated by the this particular mathematician Josephine Louis Lagrange. Okay, तो ये है. Now why L1 point only? अगर L1 point आप देखते हैं यहाँ पे, ये sun है, no, this is sun, and this particular ये sun है और ये अर्थ है. तो अर्थ के साथ साथ मून भी रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, दोनों अपने पूरे इसमें भी रिवोल्यूशन कर रहे हैं ना, एंड अपने अपने एक्सिस में रोटेशन भी कर रहे हैं सेम टाइम, ये हो रही है सभी. दिस पर्टिकुलर L1 पॉइंट, जो डिफरेंट L1 है, L1, L2, L3, L4 एंड L5, ये बिल्कुल बैलेंस्ड और द मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम एरियाज हैं, जहाँ पे क्या होता है कि सन का पुल भी वहाँ पे अपने तरह पूरी तरह से नहीं ले पाएगा आपको, ना ही अर्थ सिस्टम. तो दिस इज समथिंग, इट विल रिवॉल्व इन दिस एरिया, दोनों के साथ ये पैरेलली इस तरह से चलता रहेगा हमेशा. तो नॉट द इशू है ना, ये इस तरह से L1 पॉइंट काम करेगा जहाँ पे आदित्य L1 को प्लेस किया जाना है. इट विल टेक अबाउट 125 days टू रीच. नहीं तो इस सिस्टम में यहाँ पे नहीं है ना, और भी प्लानिट है, तो यहाँ पे आगे फिर मरकरी होगा इस तरफ, मरकरी होगा, फिर वीनस होगा, वीनस के बाद मरकरी होगा, है ना, इस तरह से होगा. तो इनके भी जो ग्रेविटेशनल पुल है उनको भी बैलेंस किया जाए. हाँ हाँ, ये इस तरह से थ्री बॉडी इसीलिए कहा गया है, द अर्थ सिस्टम, द सन सिस्टम, एंड इफ एनी इंटरमीडिएट प्लानिट इज देयर, तो वो भी उस सिस्टम को, थ्री बॉडी को बैलेंस किया जाएगा. तो दैट इज द थिंग. That is, ये the major idea behind placing in L1 point is that the clear view of sun. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था at the beginning that we have also a telescope and observatory placed in Uttarakhand, Nainital, or in somewhere in Ooty. But these clouds आते हैं कभी कभी, और भी चीज़ें होती है, एटमॉस्फेरिक एक्लिप्स होता है कभी कभी, तो इसके वजह से कभी बीच में मून आ जाती है, तो दो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन नहीं हम परस्यू कर पाते हैं. दीज आर सम रोड ब्लॉक्स एक्चुअली, दैट्स व्हाई वी परस्यूड टू place Aditya L1 in the Aditya L1 mission. L1 is because of placing in the L1 orbit, Lagrangian 1 point. ठीक है, तो this is the idea behind the placing in the L1. Other L2, जैसे L2 में आपने नाम सुना होगा, ये सन से बाहर की ओर देखता है. तो this L2 where the James Webb Space Telescope is placed in the L2, है ना. L1 में और एक ऑर्बिटरी सोहो एक ऑब्जर्वेटरी है, यूरोपियन यूनियन एंड नासा की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा की सोहो. तो दैट इज अगेन ऑब्जर्वेटरी टू हेलियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेटरी, मतलब वो भी सन को ही रीड कर रहा है. तो दे ऑल्सो प्लेस दैट सोहो ऑब्जर्वेटरी एट दिस पर्टिकुलर L1 दैट इज ऑलरेडी देयर, एंड आदित्य L1 विल ज्वाइन दैट सोहो. आगे पीछे होंगे दोनों, लेकिन दोनों सन को स्टडी करने के लिए, दैट इज ऑलरेडी देयर. एंड L2, इफ़ आप यूनिवर्स को समझना है, पूरे मिल्की वे को देखना है, तो जैसे हबल टेलीस्कोप था, उसके बाद अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, दैट इज अबाउट $10 billion टेलीस्कोप. तो दीज ऑल आर प्लेस इन द L2. जो क्लियर व्यू आएगा, सन को नहीं समझना है, इन्हें यूनिवर्स को समझना है, ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गैलेक्सी. तो दीज आर द ऑर्बिट्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स. ओके, तो जिसे इस तरह से प्लेस किया गया है. ओके, तो ये एक साइड व्यू है. इफ़ यू सी दिस ड्रोन व्यू या फिर अबव व्यू आप देखते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे द सन इज देयर, अर्थ, मून, एंड दिस पर्टिकुलर L1 दैट इज ओनली meant to direct view of the sun, that is important, and because of any of the issue that may cause a destruction, that can be because of climatic weather or some any issues or let's say phenomena, those can harm the clear vision or view. So it's all about L1. And now why eye on sun? That is because of understanding solar system, its dynamics, the direction of wind and solar winds,
magnetic sphere interactions, Earth-Sun connect, and space weather predictions. That means space weather means coronal mass injection and the same time solar winds and all, and how it's impacting the Earth space environment. Okay, I mean our lower Earth orbit, and the where satellites are placed, various observatories are there, international space stations are there. If we have to understand whether that is affecting that these particular solar mass ejections or solar winds are affecting our satellites or not, that is something the one of the cause of concern for uh, the different scientists or astronomers, and so that that is to be studied, and advancing solar physics, so how it heating mechanisms takes place, how chromosphere, how photosphere works, how these magnetic fields interact with each other, if that is with the earth, then what with the moon, or what with the Mars, or our Martian missions are there. So we have to understand now, in the near future we'll also land into the Mars, in maybe Venus, and a Sukriyan mission is there in the pipeline. So we have to understand the how it will affect our space missions as well as our future space endeavors. So augmenting energy research, and at the same time how this photosphere, I mean core, or how nuclear fission is taking place inside the sun system, and how can we harness this the natural phenomena, I mean natural reactions, to resolve the our issue of energy insecurity and green energy transition. So this is again targeted to that particular area, to our the present pressing issue of climate change and our energy security. Okay, so that is again this is something, a hidden agenda behind the ADITYA L1, not hidden, but it is very explicit. At the same time, improving satellites operations, how satellites are being affected by solar winds, magnetosphere. So this is very important to understand, because sometimes deorbiting is not because of our miscommunication or communication lacks in the real time manner, but maybe due to because of these solar winds that may also detract our well orbited orbiting or placed satellites and other observatories. So these are the some of the harm. So we'll have to the cross check by the previous year question. That question was, if a solar storm or solar flare or solar wind, solar magnetosphere, whatever you can say, reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth? GPS and navigation systems could fail. Tsunami could occur at equatorial regions. Power grids could be damaged. Intense auroras could occur over much of the earth. You have questioned that whether the auroras are happening in the north and south pole, but whether the fourth option is intense auroras could occur over much of the earth, in all the places of earth. क्या ये हो सकता है? The forest fire could take place over much of the planet, and orbits of satellites could be disturbed. They are also listening. Okay, let me finish all the options. Short wave radio communications of the aircraft flying over polar regions could be interrupted. So time is already, we are exceeded too much, but these are the 7 options, and in the year 2022 they asked the question. Power grids, the power supply transmissions, हाई टेंशन पावर्स, आप देखते हैं बड़े बड़े टावर्स के पावर सप्लाई होती है, पावर ग्रिड्स, एंड दे आर कंट्रोल बाय द पावर ग्रिड्स. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द महारत्ना कंपनी. आप सभी भी कनेक्टेड है? यस सर. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछती है. क्या आप सभी क्या समझते हैं, क्या ऑप्शन होगा इसमें? बी 2, 3, 5, 6 and 7 means tsunami could occur at the equatorial area because of solar winds. The power grid means? Yes, Divyajot? Power grid?
The power grids are simply the power transmission, means electricity supply system, ओके ओके है ना, ये आप देखे होंगे ना पावर ग्रिड्स. मतलब वही ना इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो Yes, है yes, electricity system, उसी the को बोलेंगे. grids are there, power grids. Tsunami could occur at the equatorial region. GPS and no, one by one, let us try to solve one by one. GPS navigation system could fail because of solar winds. You have seen that how magnetosphere can affect the GPS navigation system. So it is true, one is correct. ठीक है चलिए. Tsunami could occur at the equatorial region. How tsunami occurs? Earthquake is related to that. Any relation with the solar winds? Of course not. नो सर. है ना? If you could two, then obviously two are there in the three options, and only in the C where there is no option 2, where you have the issue. पावर ग्रिड्स को लेके समझ आया क्यों हुआ? बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है और सोलर विंड से ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे वो पावर ग्रिड ट्रांसमिशन अफेक्ट होंगे. ओके उनका हो सकता है ट्रांसमिशन जो एनर्जी है, आई मीन ट्रांसमिशन पावर है, वो लॉस हो जाए. ट्रांसमिशन लॉस इज वन ऑफ द इशू विद द पावर ग्रिड्स. ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स की बात है. Now, you have asked, the intense auroras could occur over much of the earth, because if solar flare could reach up to the earth at the heavy amount, till date it is in the lesser amount. मे बी कल को ऐसा हो जाए कि अर्थ का सन का फोटोस्फीयर एंड कोरोनास्फीयर ज़्यादा मास इजेक्शंस कर रहे हों, तो सोलर विंड्स और प्लाज्मा का अमाउंट भी ज़्यादा होगा. ज़्यादा अगर होगा तो ज़्यादा रीच करेगा अर्थ में. तो फिर जो अभी केवल आयोनाइज हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ पोल में, तो ये इस एरिया को भी आयोनाइज कर देगा, तो ऑरोरास बनने के चांसेस बनते हैं. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल, नॉट इट इज़ प्रेजेंटली हैपनिंग, बट इट कैन बी if the more and more ejections and coronal radiation will be propagated, and that may if reaching to the sun system, I mean earth system. So 4 is again correct. कहाँ पे आपको issue है? 5. Forest fire is nothing to do with the solar winds, and so again that is like tsunami. And orbits of the satellite could be disturbed. Very true, that can be happen. Short wave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted. Yes, that is navigation system could be affected, because these are based on radio wave signals. And the radio wave signals are simply the one of the aspects, I mean part of the electromagnetic spectrum and this energy spectrum. So of course they will also be affected. कहीं पे doubt